Assalamu alaikum, students of class 5. This is your halakha lesson and it's Friday, as you all know, and date is 17th of April 2026. Girls and boys, we did unit number 1 in the previous weeks and now it's time to start with unit number 2, as I have told you yesterday to read it thoroughly and we'll be discussing it. Okay? Now, what is the name of the unit? It is fingerprints, the unique creation of Allah. What are fingerprints? Have you seen, have you observed your fingers? देखें जरा अपनी अपनी उंगलियों को देखें सब. Look at the prints. ये वो prints हैं जो कोई इंसान नहीं बना सकता. ये वो prints हैं जिनको change भी नहीं किया जा सकता. Exactly. आपने देखे जब हम जाते हैं, when we go somewhere and for example, any bank account or identity card or attendance to be marked, like I come to school every day and I have to mark my biometric attendance. For what purpose? क्यों लगवाते हैं हम? और हर किसी के आईडी कार्ड के लिए उसका फिंगरप्रिंट या थंब इम्प्रेशन होना क्यों जरूरी है? क्यों है? इसलिए है कि अल्लाह ताला ने सबको एक खास प्रिंटिंग से नवाजा है. ये प्रिंट सबके अलग अलग हैं. मेरा आपसे मैच नहीं कर पाएगा, मेरे अपने बच्चों से मैच नहीं कर पाएगा. इवन योर फिंगरप्रिंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम योर सिबलिंग्स एंड योर फिंगरप्रिंट्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर पेरेंट्स. these are these are the identity marks of yours. अगर मैं कहूँ कि मेरे चेहरे पे जी कहीं एक आधा मोल है, तो किसी और के भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं वो किसी और के नहीं हो सकते. So that is why we call fingerprints a unique creation of Allah. कि ये जो सारी महारत है, ये जो सारी एक खूबसूरती है, हमारे जिस्म को अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया है, हमें हर हर चीज़ से नवाजा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर जिस्म का हर इस हिस्सा हमारे प्रॉपर काम करता है, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. एंड इट्स इज़ अ यूनिक क्रिएशन ऑफ अल्लाह. दिस इज़ नॉट इन हैंड्स ऑफ एनी ऑफ द human beings. So we will be discussing that whatever has been told in this unit, unique creation of Allah, the fingerprints. So there are 5,000 million people in the world. दुनिया की आबादी ना, आपको पता है ना कि बहुत ज़्यादा है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ऑफ कोर्स. तो जितने भी लोग हैं, हर बच्चा डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स लेके पैदा होता है, ठीक है. ये उसकी आइडेंटिटी है, उसकी शिनाख्त है. Some are tall, some are short, some are big, some are small, and some have black hair, some have fair hair. Every human being is different. They are not like each other. Even जो identical twins भी पैदा होते हैं ना, हमने twins देखते हैं ना, जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे दिखने में लगते हैं. उनकी शक्लें बेशक एक जैसी हों, उनकी हाइट, उनका कलर, उनका बोलने का अंदाज, उनकी आंखों का रंग चाहे एक जैसा हो, लेकिन व्हाट वुड बी डिफरेंट? देयर फिंगरप्रिंट्स. वो फिर भी डिफरेंट ही होंगे. So this is the evidence of Allah's greatness and wisdom. कि हर शख्स की अपनी शनाख्त है, कोई दूसरे की फिंगरप्रिंट्स नहीं चुरा सकता, राइट? See, when we consider the fingerprints as the uniqueness, we have an ayah in the Surah Qiyamah, ayah number 75. It is written in your book that, does man think we will not assemble his bones? Yes, we are able even to put together in perfect order the very tips of his fingers. अब जब हमने पिछले यूनिट में पढ़ा तौहीद के हवाले से, तौहीद के बारे में, तो उसमें हमने ये पढ़ा कि जो the attributes which Allah has, none of us can have it. ठीक है, वो अल्लाह की क्वालिटीज़ हैं, अल्लाह की एट्रीब्यूट्स हैं, अल्लाह के साथ ही रिलेटेड हैं, अल्लाह के लिए ही हैं.
Similarly, in Quran, in Surah Qiyamah, ayat number 75, it has been told by Allah that every um, Muslim or every person in the universe is having different fingerprints. और अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम तुम्हें तोड़ कर भी ऐसे असेंबल कर सकते हैं दोबारा से कि जैसे बिल्कुल नए हो तुम. इवन द फिंगरप्रिंट्स वुड बी द सेम. हमें पता है ना कि हमने जब मरना है और फिर क़यामत के दिन सबने जीना है. सो एवरीवन वुड बी लाइक बी असेंबल्ड अगेन. हड्डियां जुड़ जाएंगी. अल्लाह के इख्तियार में है सब कुछ कि वो चाहे तो फना कर दे, चाहे तो फना हुए को दोबारा बना दे. So fingerprints is one of those aspects of human beings which cannot be changed by anyone, right? One feature that distinguishes you from anyone else is the pattern of the curved lines on the tips of your fingers. ये देखें ना, सब अपनी अपनी fingers को देखें. See, everyone, this whole pattern is different. अपनी देखें, अपने मामा की भी देखें, अम्मी की भी देखें, अपने बाबा की भी देखें. They will not be like similar to each other. Every pattern is different. The patterns of your fingerprints do not change as you grow older, even if your skin becomes cracked and wrinkled with age. So, your fingerprints can be used to identify you. Wherever you go, you tend to leave your fingerprints behind you. ये जब हम बूढ़े भी हो जाएंगे, जब हमारी स्किन खराब भी हो जाएगी, क्रैक भी हो जाएगी, फिंगरप्रिंट्स हमारे चेंज होंगे, ये एज इट इज रहेंगे और हम जहाँ जाते हैं हमारी निशानी होती है. आप देखिए ना पुलिस की, यू मस्ट हैव सीन सम मूवीज और एनी ड्रामा सीरियल्स और एनीथिंग फ्रॉम वेयर दे और न्यूज में you often observe and hear this that fingerprints match हो गए, fingerprints match हो गए. पढ़ते हैं ना, सुन लेते हैं ना आप कि जब भी कोई खुदा न खास्ता कहीं पे कोई ऐसा जुर्म होता है तो वहाँ के फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई किससे मिलते हैं, और जिससे फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं ऑफ कोर्स वो कल्प्रिट होता है, वो पकड़ा जाता है, फिर जो उसको करार वाकई सज़ा मिलनी है वो मिलती है. तो ये अल्लाह ताला ने एक निशानी रखी हुई है सब इंसानों की. एंड दिस इज डिफरेंट, दिस इज नॉट द सेम, इट्स डिफरेंट. In another ayat of Surah Al-Qiyamah, it is written that does man think we will not assemble his bone? Again, it's the same. In the 7th century, the Quran pointed out that the fingerprints of human beings bear a unique characteristic. It shows that Quran is the word of Allah. Every bit of information and description of Quran is true because every verse of it, every syllable of it, every particle of it is from Almighty Allah. It also shows that Allah is great and wise and creates everything in the best of forms and shape. Allah Ta'ala He has created the best creation with wisdom, differentiation, and He is the only one who has the right, the ability, the potential to change anything. ठीक है, कोई यहाँ इंसान को कितना ही खुदा को क्यों ना समझे नाउज़ुबिल्ला, वो कभी भी अल्लाह ताला की खुसूसियात तक नहीं पहुँच सकता. Not even a single fingerprint cannot be generated, you know, and it cannot be matched with any other human being. So the whole unit is about the uniqueness of the fingerprints, and it is a unique creation of Allah. Now boys and girls, I would like you people to take out your notebooks and I'll give you a few words from this unit. You have to find out using your dictionary the meanings of those words and write it in your notebook and bring it on Monday to get them checked by me. Please prepare the page, draw margin line, date and day. And let me write the name of unit again. It's unit number 2.
Please prepare the page very neatly. Fingerprints. The unique creation of Allah. So this is the heading. Please write it down quickly. Now I am going to erase this board to have sufficient space for the written work. Just wait for a while. There we have the board again prepared. The first word is miraculous. Miraculous. Okay. Second word is unique. Unique. Miraculous, unique. Number 3 is wisdom. Wisdom. Number 4 is evidence. 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 Number 5 is feature. 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 Number 6 is coincidence. Coincidence. See, the spelling should be correct. Every time you write a word, make sure that you are writing correct spelling. Please. Number 7 is almighty. Almighty. Number 8 is pattern. 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 Number 9 I was writing here. Number 9 is, let me check, stressed. 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 And number 10 is assemble. Assemble. Okay. So please take your dictionaries, take out them and find out the meanings of the words. Number 1 is miraculous. Number 2 is unique. Number 3 is wisdom. Number 4 is evidence. Number 5 is feature. Number 6 coincidence. Number 7 almighty. Number 8 pattern. Number 9 stressed. And number 10 assemble. Okay. Okay, after doing the word meanings which you would do on your own at your home, now we'll be doing fill in the blank statements from the same unit. I will be writing the statements on the board and I'll ask you to fill in the blanks after reading the unit. So number 1 is there are about dash million people in the world. Abhi, this is the first sentence. There are about million people in the world. How many people are there in the world? We have just read there are about, yes, very good. Ibrahim, 5,000 million people in the world. That's great. वैसे ये मुझे तो लगता है इससे भी काफ़ी ज़्यादा है. आबादी तो बहुत है हमारी दुनिया की ना. इवन हमारे मुल्क की आबादी बहुत ज़्यादा होती जा रही है दिन ब दिन. So write it down. Number 2 is this universe is the dash of Allah's wisdom. This universe is a dash of Allah's wisdom. This universe is the, yes Anaya, evidence. बिल्कुल सही सबूत है ना. This universe is the
एविडेंस, सबूत है अल्लाह की विजडम का, अल्लाह ताला के. There's no match, as we have read several times that there is no match of Allah. Number 3 is the dash creation of man is stressed in many verses of Quran. The dash creation of man is stressed in many verses of Quran. What do you think about the creation of man? Is it a very ordinary creation? It is very regular, normal creation? Do you think that anyone can make or create a human being? No, not at all. It is a miraculous creation. Miraculous. मौजज़ाना है भाई, इंसान बना नहीं सकता कोई भी सिवाय अल्लाह के. The miraculous creation of man is stressed in many verses of Quran. I have a limited space, so please, next 2 sentences I'll be doing after erasing the board. I'll give you 1 minute to complete your work here. Number 4. Every human being has a dash pattern of fingerprints. Every human being has a dash pattern of fingerprints. Is it similar? Is it different? Is it unique? Unique. Very good. Unique is the correct word. Unique is the correct word here because everyone's fingerprints are unique, one and only for that particular person. किसी के साथ मैच नहीं कर पाएंगे. Right? Number 5 is the fingerprints were discovered in the late dash century. कब ये डिस्कवर हुए कि जी फिंगरप्रिंट्स हैं, सबके अपने अपने हैं और किसी का किसी से मैच नहीं कर रहा. इट वॉज लेट 19th century, right? So the fingerprints were discovered in the late 19th century. Complete your work. Please make sure that you're writing neatly, you're writing correct spellings, date and day has been written, margin line has been drawn. Everything is to be taken care of when you are doing your written work. Let's have a little recap of whatever we have read today. We have read about the fingerprints. They are unique. They were discovered in late 19th century. These are basic information which you people should have, which we all should have. Okay? Fingerprints are unique and they cannot be
removed. Even when we get old, even when we have cracked skin, even when we have some damage on our fingers, ये फिंगरप्रिंट्स हमारे रहते हैं और हमारी शनाख्त हैं। ये फिंगरप्रिंट्स हमारी आइडेंटिटी हैं, राइट। आज आपने सबने अपने अपने फिंगरप्रिंट्स जरा चेक कीजिएगा ना अपनी सारी फैमिली मेम्बर्स के साथ, देखिएगा किसी का किसी के साथ मैच नहीं हो पाएगा, राइट, बिकॉज इट इज़ अ यूनिक क्रिएशन ऑफ अल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।